Hello friends, now in this video I will be taking three topics. Number one, properties related to convexity of a bond. Number two, money convexity and its use for calculation of change in bond price and or value of bond holding. And number three, calculation of duration and convexity for a portfolio of multiple bonds and of course its limitation. तो ये तीन टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक्सपेक्टेड अब ये रहेगा कि आप सब ने प्रैक्टिस कर ली है मैकॉले ड्यूरेशन, टेबुलर फॉर्मेट, क्लोज फॉर्म इक्वेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, टेबुलर फॉर्मेट एंड अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फॉर्मूले की, और उसमें कॉन्वेक्सिटी एंड अप्रॉक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी, ये तीनों आपने कर लिए हैं। न्यू बॉन्ड प्राइस का कैलकुलेशन यूजिंग ड्यूरेशन और ड्यूरेशन अलॉन्ग विद कॉन्वेक्सिटी भी आपको आता है। हमने मनी ड्यूरेशन भी ऑलरेडी कर रखा है, सो आज उससे रिलेटेड टॉपिक होगा मनी कॉन्वेक्सिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। नंबर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी। तो व्हेन आई से प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी, जैसा हमने ड्यूरेशन के साथ किया था कि ड्यूरेशन का कूपन रेट, यील्ड, टाइम टू मैच्योरिटी और टाइम लैप्स फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, वैसा ही यहां पर भी हम बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी का बॉन्ड फीचर्स, कूपन, यील्ड और टाइम टू मैच्योरिटी के साथ क्या रिलेशन होगा, हम वो देखने वाले। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और कंपैरिजन के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दो बॉन्ड्स के बीच में आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कौन सा बॉन्ड बेनिफिशियल है या कौन से बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क के लिए तो हमने वैसे बॉन्ड ड्यूरेशन की प्रॉपर्टीज समझी थी। ड्यूरेशन की प्रॉपर्टीज मैकॉले, मॉडिफाइड और मनी ड्यूरेशन सबके लिए सेम प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल थी। हमने वहां पर क्या देखा था, कूपन रेट और यील्ड नेगेटिवली रिलेटेड थे बॉन्ड ड्यूरेशन से, टाइम टू मैच्योरिटी पॉजिटिवली रिलेटेड था। यहां पर भी हम वही वाले सारे फैक्टर्स देखेंगे। लेट्स गो फॉर दोस फैक्टर्स। अच्छा, टाइम टू मैच्योरिटी, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट कूपन डेट का क्या रिलेशनशिप था? टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट कूपन डेट का रिलेशनशिप था कि जैसे जैसे बॉन्ड अपने टाइम टू मैच्योरिटी को कंप्लीट करता है वैसे वैसे बॉन्ड का ड्यूरेशन रिड्यूस तो होता है, बट जिस दिन कूपन पेमेंट होता है उस दिन स्लाइटली जंप भी होता है, बिकॉज वो जो थर्ड टर्म था माइनस टी बाई कैपिटल टी, वो जीरोइज हो जाता है। उससे बॉन्ड ड्यूरेशन एक बार तो वो सॉ टूथ पैटर्न भी बनाता है। तो ये सब कुछ हमने देखा था। टाइम टू मैच्योरिटी में एक एक्सेप्शन था, डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड में एक छोटा सा एक्सेप्शन था ड्यूरेशन के केस में, वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स गो फॉर रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी विद बॉन्ड फीचर्स। ऑफ कोर्स we are talking about a fixed rate coupon paying bond only. हम यहाँ फ्लोटिंग रेट की बात नहीं कर रहे, या फिर हम ऑप्शन वाले बॉन्ड्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स। सबसे पहला रिलेशनशिप कूपन रेट एंड वाईटीएम, सेम एज वी वर हैविंग इन केस ऑफ ड्यूरेशन। कूपन और वाईटीएम वहां पर भी नेगेटिवली रिलेटेड था, यहां पर भी नेगेटिवली रिलेटेड है। ऐसा क्यों? जितना ज्यादा कूपन ज्यादा होगा, जितना कूपन ज्यादा होगा, दोनों का ऑफकोर्स जस्टिफिकेशन अलग अलग है। जितना कूपन ज्यादा होगा नियर टर्म कैश फ्लोज हायर होंगे, नियर टर्म कैश फ्लोज हायर होंगे तो उनका वेटेज हायर होगा, वेटेज हायर होगा तो वेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हायर होगा। तो वेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हायर होगा, लेकिन ये नियर टर्म कैश फ्लो का टाइम वैसे भी लोअर होता है, 1 to 3 रहेगा। और जितना नियर टर्म कैश फ्लोज का टाइम वेटेज बढ़ता जाएगा उतना ही आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू जो रिसीव होने वाला है उसका वेटेज रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हायर नंबर से मल्टीप्लाई होता है बिकॉज उसका पीरियड सबसे लास्ट में आता है। तो उसका जो वेटेड वैल्यू होगा WT इंटू टी, वेट इंटू टाइम, वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। नियर टर्म के वैल्यूज इंक्रीज होंगे, बट जो हायर वैल्यू रखता है आपके बॉन्ड प्राइस में, उसका सिग्निफिकेंटली वेट रिड्यूस होने के कारण आपका वेटेड सम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन या मैकॉले ड्यूरेशन में कूपन रेट हायर होने के कारण आपका वेटेड सम रिड्यूस हो रहा था, वेटेड सम ऑफ टाइम रिड्यूस हो रहा था, सेम इंपैक्ट आपका कॉन्वेक्सिटी पे भी होगा।
क्योंकि कॉन्वेक्सिटी में भी हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था जिसमें हमने वेट इंटू टी प्लस वन किया था। तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग के अगर नंबर्स का वेटेज हायर होगा तो उसका जो लास्ट कॉलम के फिगर्स होंगे वो भी हायर होंगे, और जितना आपका प्रिंसिपल वैल्यू का वेटेज गिरेगा उतना ही आपका लास्ट टर्म का टोटल भी गिरेगा। तो ओवरऑल आपका कॉन्वेक्सिटी उसके कारण कम हो जाएगा। हमें पूरा इतना न्यूमेरिकल प्रूव नहीं करना है, बट फ्रॉम अगर कुछ समझें तो हमारे लिए एक चीज समझना होगा कि अगर आपका कूपन वन इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय वन, उसका जो भी वेट होगा, एंड कूपन टू विल बी मल्टीप्लाइड बाय टू, जो भी उसका वेट होगा, वेटेज ऑफ कूपन वन, वेटेज ऑफ कूपन टू, जबकि आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगा C3 प्लस RV, रिडम्पशन वैल्यू वो मल्टीप्लाई होता है 3। तो अगर आप इनके वेटेज बढ़ाएंगे और इसका वेटेज रिड्यूस होगा तो ओवरऑल ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी दोनों रिड्यूस होगा। नंबर 2, YTM जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, YTM जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही प्रेजेंट वैल्यूज कम होती जाएगी कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण। जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो जो कैश फ्लो जितना दूर होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू उतना कम होगा। तो ये जो थर्ड कैश फ्लो आपका RV आ रहा है, रिडम्पशन वैल्यू आ रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस होने के कारण उसका वेटेज कम हो जाएगा अगेन। तो इसका मतलब, और उसका वेटेज कम होगा जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल वैल्यू जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना यील्ड बढ़ेगा उतना ही वेटेड सम रिड्यूस हो जाएगा। तो सेम इंपैक्ट आएगा आपके लास्ट कॉलम कॉन्वेक्सिटी के कैलकुलेशन पे भी, इसका मतलब कॉन्वेक्सिटी भी रिड्यूस होगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, कूपन रेट एंड YTM ये मानते हुए एट अ टाइम एक फैक्टर का चेंज आ रहा है, मल्टीपल फैक्टर एक साथ चेंज नहीं हैंडल कर रहे हैं हम। मल्टीपल फैक्टर अगर एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक बॉन्ड का कूपन कम है पर उसका YTM ज्यादा है, दूसरे बॉन्ड का YTM कम है लेकिन कूपन ज्यादा है, ऐसे केस में हम कंक्लूड नहीं कर सकते, फिर हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा पूरा टेबुलर फॉर्मेट या अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला लगा के। पर जहां पर कीपिंग ऑल एल्स इक्वल लिखा है एंड ओनली कूपन चेंजेस, कूपन रेट्स में डिफरेंस है, दो बॉन्ड है X और Y, हमें क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे, बाकी सारे वेरिएबल सेम है, टाइम टू मैच्योरिटी, यील्ड, एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज कूपन रेट। सो जिसका कूपन रेट हायर होगा कॉन्वेक्सिटी कम होगी, ड्यूरेशन भी कम होगा, एंड वाइस वर्सा। सेम केस YTM का जब क्वेश्चन आएगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, टाइम टू मैच्योरिटी, कूपन, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, पीरियोडिसिटी कांस्टेंट। उस केस में अगर YTM जिसका ज्यादा होगा उसका ड्यूरेशन कम होगा, उसका कॉन्वेक्सिटी भी कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, आप मैथमेटिकली देख भी सकते हैं टेबल में अप्लाई करके। नेक्स्ट, टाइम टू मैच्योरिटी। ऑफ कोर्स टाइम टू मैच्योरिटी ड्यूरेशन के साथ भी पॉजिटिवली रिलेटेड था और यहां पर भी पॉजिटिवली ही रिलेटेड, क्योंकि जितना, अगर दो बॉन्ड की बात करें P एंड Q, अगर इसके बॉन्ड के ड्यूरेशन, अगर आपके टेन्योर 3 साल है जबकि इसके बॉन्ड के टेन्योर अगर 5 ईयर है, तो जो रिडम्पशन वैल्यू होगा आपका Q का बॉन्ड का वो 5 से मल्टीप्लाई होगा उसका वेट, जबकि जो P का वेटेज होगा कैश फ्लो का, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ऑटोमेटिकली आपका वेटेड प्रोडक्ट जो आ रहा है W इंटू टी या फिर W इंटू टी प्लस वन, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट कॉलम, दोनों में P के वैल्यूज कम होंगे, सो ऑटोमेटिक उनका ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी कम होगा। सो जिसका ड्यूरेशन, जिसका टेन्योर टर्म टू मैच्योरिटी कम, उसका ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी भी कम। नेक्स्ट, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज डिस्पर्शन ऑफ कैश फ्लो। Dispersion of cash flow is positively related with convexity and higher the better और lower the better, ये भी हमें समझना है। Convexity, दो बॉन्ड जिनके ड्यूरेशन सेम हो सकते हैं बट अगर उनके कॉन्वेक्सिटी डिफरेंट हो सकते हैं, रीजन बीइंग उनके कैश फ्लो में जो डिस्पर्शन है, जो डेविएशन है, वो अगर ज्यादा है तो जिसका डिस्पर्शन ज्यादा होगा उसका कॉन्वेक्सिटी भी ज्यादा होगा। एक वो बॉन्ड जिसमें कैश फ्लो एक पैटर्न में आ रहे हैं जबकि दूसरे बॉन्ड जिसमें बॉन्ड में कैश फ्लो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऐसे केस में आपका जो बॉन्ड जिसका कैश फ्लोज का डिस्पर्शन हायर होगा, टाइम गैप हायर होगा, उस बॉन्ड का आपका कॉन्वेक्सिटी भी हायर होगा। हमें न्यूमेरिकली प्रूव नहीं करना है, अदरवाइज हो भी सकता है। आप बॉन्ड के कैश फ्लोज प्लॉट कर सकते हैं एक एनुअल और एक सेमी एनुअल लेके। नेक्स्ट, यहां पर क्या बोलता है, बट ये पॉजिटिव डिस्पर्शन बेनिफिट कैसे करेगा? बेनिफिट ऐसे करेगा कि दो बॉन्ड जिनका टेन्योर सेम होगा, हो सकता है ड्यूरेशन उनका सेम हो, दो बॉन्ड, नॉट टेन्योर, आई एम सेइंग ड्यूरेशन दो बॉन्ड का सेम है,
क्यों? बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों कर्व क्रिएट करते हैं और दोनों की इस यील्ड पे जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, टेंजेंट लाइन का स्लोप, वो कांस्टेंट हो सकता है, सेम हो सकता है। पर हम देख सकते हैं ग्राफ में बॉन्ड ए के कॉन्वेक्सिटी, बॉन्ड ए आपने रेड लाइन टेंजेंट से बहुत ज्यादा डेविएट हो रही है, जबकि बॉन्ड बी अपनी रेड लाइन से, अपनी यानी कि टेंजेंट से कम डेविएट हो रही है। दोनों के डेविएशन में बहुत सारा डिफरेंस है, जबकि सेकेंड केस में आपका पूरा डेविएशन ब्लू तक, पर्पल लाइन तक चला जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके बॉन्ड के कैश फ्लोज का फ्लक्चुएशन या टाइम गैप बहुत ज्यादा हो, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो। तो जितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा उतना बेनिफिशियल है इन्वेस्टर के लिए या नेगेटिव है। तो dispersion of cash flow is the degree to which cash flow are spread out over time. So basically जितना ज्यादा spread out होगा cash flow उतना ही dispersion ज्यादा होगा, उतनी ही convexity ज्यादा होगी। Let's find out कि bond A is beneficial to hold और B is better. Bond A is more convex than bond B. We can see that from the curve. और दोनों का tangent line same है, इसका मतलब दोनों का modified duration same है। They have same price assuming, ये हमने assumption लिया है। वैसे अभी हम कंक्लूड करेंगे बॉन्ड ए इज बेनिफिशियल टू इन्वेस्टर। तो जो चीज जिसका ड्यूरेशन सेम है और अगर ए वर्सेस बी में ए बेनिफिशियल है तो ऑफ कोर्स फॉर ए मार्केट में प्राइसेस हायर होगी, मार्केट प्राइस में उस एडिशनल बेनिफिट को ऑलरेडी कैप्चर कर रखा होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने। So assuming they have same price, same maturity, same yield and same modified duration, so share same tangent line to price yield equation. Price yield कर्व में दोनों का क्या होगा, tangent line same हो जाएगा। But for same decrease in yield, तो अगर हम R0 से R माइनस जाएं या R प्लस जाएं, we can see here that के R माइनस पे जो परपेंडिकुलर ऊपर अपने अपने कर्व को टच करेगा वहां पीवी ए माइनस इज ग्रेटर देन पीवी बी माइनस। या फिर अगर हम हायर साइड यील्ड इंक्रीज करें तो यहां पर अगेन पीवी ए प्लस इज स्टिल ग्रेटर देन पीवी बी। तो जितना ज्यादा कॉन्वेक्सिटी होगा बॉन्ड का उतना ही बॉन्ड के प्राइसेस हायर रहेंगे कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, whether yield decreases or whether yield increases। तो मार्केट में कोई भी सिनेरियो चल रहा हो, इंटरेस्ट रेट, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट हो या राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो, अगर दो बॉन्ड में ड्यूरेशन सेम है तो यू शुड बी प्रेफरिंग दैट बॉन्ड विच इज हैविंग अ हायर कॉन्वेक्सिटी। उस केस में मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो तो भी आपका बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज ज्यादा होगा, और मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए तो आपके बॉन्ड के प्राइस कम डिक्रीज होंगे। What it says, for the same decrease in YTM prices up होंगे। The more convex bond appreciate more in price, उसका प्राइस का appreciation ज्यादा होगा। Which while for the same increase in yield, increase होगा तो prices गिरेंगे। The more convex bond depreciate less, उसके गिरने की रफ्तार कम होगी तो उसका मतलब आपका डिक्रीज भी कम होगा, लॉसेस कम होंगे। Thus, more convex bond will outperform the less convex bond in either case, market rising or falling interest rate. Thus, more convexity of price yield relationship, less be the price risk and vice versa. So, जितना ज़्यादा bond में convexity है, उतना ही bond में price risk भी कम होगा, because दोनों ही केस में इन्वेस्टर का losses कम होगा या profits higher होगा। Assuming bond A के prices में और बॉन्ड बी की प्राइसेस दोनों सेम हैं और बॉन्ड ए की प्राइस में जो ये कॉन्वेक्सिटी, एक्स्ट्रा कॉन्वेक्सिटी का जो एडिशनल एडवांटेज इन्वेस्टर को होने वाला है वो कंसिडर्ड नहीं है, जो कि रेयर होगा। एक्चुअली बॉन्ड ए मस्ट बी ट्रेडिंग एट हायर प्राइस देन बॉन्ड बी। तो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि बॉन्ड ए को होल्ड करने से प्राइस रिस्क रिड्यूस हो रही है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। 4 फीचर्स कूपन रेट यील्ड के साथ नेगेटिवली रिलेटेड, एंड ड्यूरेशन, टाइम टू मैच्योरिटी एंड डिस्पर्शन ऑफ कैश फ्लो के साथ में कॉन्वेक्सिटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड। और जितना ज्यादा बॉन्ड कॉन्वेक्स होगा उतना ही बॉन्ड का प्राइस रिस्क कम होगा, सो उतना ही इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा।
नेक्स्ट लेट्स, ये कंपैरिजन के क्वेश्चन आएंगे, आपको दो बॉन्ड में कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज मनी कॉन्वेक्सिटी. नेक्स्ट इज मनी कॉन्वेक्सिटी. नाउ व्हाट इज मनी कॉन्वेक्सिटी? हमने पहले भी समझा है मनी ड्यूरेशन. मनी ड्यूरेशन इंडिकेट द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट ऑफ फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन करेंसी यूनिट्स. तो जैसे मनी ड्यूरेशन ने करेंसी यूनिट्स में चेंज इन प्राइस को डिनोट किया था, वैसे ही कॉन्वेक्सिटी भी सेकेंड ऑर्डर को इफेक्ट लेके आएगी इन करेंसी यूनिट. हमने वहां पर क्या देखा था? इट वाज परसेंटेज चेंज इन पीवी is equals to negative modified duration multiplied by change in YTM per annum. Annualized modified duration into change in YTM per annum. नाउ अगर दोनों साइड को फुल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, फुल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय फुल प्राइस पीवी, दिस गिव्स मी चेंज इन पीवी. Percentage got multiplied by value, so it will give me effective change. And here it will become minus annualized modified duration multiplied by PV multiplied by change in YTM per annum. So this is giving us negative annualized money duration multiplied by change in YTM. Same concept पे हम यहां पर कॉन्वेक्सिटी का भी इफेक्ट लेंगे. तो अगर मनी कॉन्वेक्सिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहां मनी ड्यूरेशन के लिए क्या फॉर्मूला बनाया? इट इज एनुअलाइज मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय पीवी फुल. तो अगर आपको मनी कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, मनी कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, सो वी कैन यूज एनुअलाइज्ड कॉन्वेक्सिटी multiplied by PV full on the same way. एंड जो हमने चेंज इन पीवी का फॉर्मूला विथ कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट किया था, चेंज इन पीवी का फॉर्मूला था हमारा नेगेटिव एमडी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पीवी वाज नेगेटिव एमडी मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड plus half of convexity multiplied by change in yield square. This was giving us percentage change in PV. Multiply both side by PV, we will get change in PV full is equals to negative money duration, because now PV will be multiplied by both the terms in the right hand side. So modified duration multiplied by PV will become money duration multiplied by change in yield plus half of convexity will be multiplied by PV again, because both terms will be multiplied by PV. It will become money convexity multiplied by change in yield square. So this is our second formula. So now if you have a bond, let's take the example what we have already calculated. So we have this example which we have calculated in the last video. We have annualized modified duration of 3.6924 and convexity of 18.4474. These are not in rupee term. What we are going to do, we have a PV of 92.7904. So let's use these numbers and calculate what will be the change in value of this bond if I am holding, let's assume 1000 bonds of this particular company, which is having a face value of 100 and running at 92.7904. So let's use these numbers. 92.7904
is not moving. So let's use this page only now. So we have this 92.7904. Number of bonds investor is holding is 1000. PV full is 92.7904. Bond is at present having a modified duration of, it's an annual coupon paying bond, modified duration of 3.6, no, it's, 3.6924. YTM is 12%. N is, I think, 5-year or 5-year. Face value is 100 and coupon is your 10%. These are the features, and periodicity is annual. Modified duration we have calculated 3.6924, and convexity we have calculated, annualized convexity is 18.4774. 18.4774. So before going for money convexity, these numbers we should be having. Most probably question will give these numbers for calculation of money convexity. Now what we want to calculate? If you want to calculate annualized money convexity, annualized first duration, money duration, it is equals to annualized modified duration multiplied by PV full. So this is equals to 3.6924 multiplied by 92.7904 gives us, it's the full price multiplied by your modified duration. So money convexity of each bond is 3.6924 multiplied by 92.7904 gives you 342.6193, and this is in rupees terms. This is in rupees or dollar term, whatever is the denomination of your bond. Next is annualized convexity, money convexity. So we should be using annualized numbers only. So if it's a semi-annual bond, you have to change that by dividing it number by table summation by 2 in case of annual bond, and by dividing for duration, and for convexity it will be divided by 4. So annualized convexity multiplied by PV full, this is equals to 18.4774 multiplied by 92.7904. Let's calculate what is the value. 18.4774 multiplied by 92.7904 gives you 1714.5253. So this is again in rupees term, currency units. Next, now how to use this money duration or money convexity. We will take an example of, let yield increases to 13%. What will be the first of all, what will be the new PV full, since we are working on coupon payment date, so flat and full price are same. So let's input the values. 10 as your coupon, 100 face value, then 13 is your yield, and 5 is your number of years. We calculated this value as 89.4483. What is the value of portfolio? Value of holding is equals to 89,448.30. Existing value of holding is equals to 90, what was the value? 92,790.40. What is the change in PV? What is the change in value of your holding? So change in value of holding is equals to, of course you are going to get loss because yield are increasing. Change in value of holding is equals to 89,448.30 minus 92
92,790.40 is equals to, what is the change in holding? 92,7904 is equals to negative 3,342 is your loss in the holding from the bond price yield equation. Now let's calculate it from the using modified duration and convexity, money duration and money convexity. Change in PV will be equals to negative MD, money duration, of course annualized, into change in yield plus half of money convexity multiplied by change in yield square. Let's put the values. Money duration is equals to, what is the money duration? Negative 342.6193 multiplied by 1% increase plus half of money convexity is 1714.5253 multiplied by 1% square. So we got the values. Let's find out what is the change in one bond. This will give change in present value of single bond. So this is 1714.5253 multiplied by, divided by 2 multiplied by 1% multiplied by 1%. So this is a positive value first. Next, negative value 342.6193 multiplied by 1%. This is negative value plus your money convexity is positive term. It is giving us negative 3.3405 per rupee in rupees terms. It's change in PV in rupees terms. So change in holding, change in value of holding is equals to, we are holding 1000 bonds. So 1000 multiplied by negative 3.3405 gives us negative 3,340.50. So almost 1.5 rupees difference. It's negligible, and because we are working on first order and second order derivatives. So I hope everyone understood what is the concept of money duration and money convexity. Use annualized numbers and apply it on PV full price. So I hope with this last part is your bond duration, bond portfolio duration and portfolio convexity. Let's go for the last part. Now, what type of question we will be getting in this case? In case of money duration, money convexity, they can directly ask you to calculate money duration and money convexity on annualized basis, or they can ask you to calculate a change in PV using money convexity and money duration. So you will be using this formula. Next, let's move to portfolio duration and convexity. Now, here what type of question they can give? Number one, they will ask you to calculate bond portfolio duration and bond convexity, portfolio convexity, number one. Number two, they may ask you to find out the change in value of your portfolio, overall portfolio. And third type of question will be that there is already a portfolio of A and B bond. Now we are adding one more bond C. Whether the duration and convexity is going up or going down, or they may ask you, okay, whether the price risk is going up and down depending on your change in your modified duration, how modified duration is increasing or decreasing. Now, what are the two methods? First of all, two methods to calculate portfolio duration and convexity. The first method, which is theoretically correct, is the way we have calculated duration and convexity using the table format of one bond. What you should be doing, if you are having three bonds, you should plot all the cash flows chronologically, yani date wise, all the cash flows coming in order of receipt from all the three bonds, and then create a table for combined cash flows of all those three bonds as per their date of time to receipt, date or time to receipt. This is the theoretically correct method, but very in practice this is not utilized. Why? If a portfolio is holding 1000 bonds,
calculating date-wise cash flows of those 1,000 bonds, putting them in the table and calculating the weighted average time and then calculating the convexity may not be very practical. So in practice, generally the second method is used, and the second method is very simple. Of course, it is having limitation. Of course, it is having limitation. What is the second method? Use weighted average of duration and convexity of the individual bonds, of course, and weight will be their market price. That makes up the portfolio. So what you have to do, you have to find the, first of all, create a table, very simple. Let's say we have bond A, B, C, D, 4 bonds we are holding. Then find out their market value. How to calculate market value? Market value, number of bonds multiplied by PV full, their respective prices. So one, you must be holding 1,000 bonds. Second, you are holding 10,000 bonds. Third, you are holding 500 bonds. Fourth, you are holding 5,000 bonds. These are number of bonds. Or you may multiply their nominal value multiplied by PV full upon again the par value to give the market value. Both are correct. So multiply, let's say this is 99 rupees, this is 101 rupees, this is 103 rupees, and this is, let's say, 98 rupees. So this is going to give you 99,000. 101 000, so this is 10,10,000. This is how much? 500 into 103 is equals to 51,000 only. 51,500. And the last one is 98 into 5,000 is equals to 4,90,000. Very so you have to calculate the market value, calculate the overall market value. The overall market value of your portfolio is 16,50,500. 16,50,500. What you have to do? Calculate the weightage. 99,000 divided by your weight is equals to 0.06. 10,10,000 divided by your total value is 0.6119. 51,500 divided by your value is equals to 0.0312. And the last one is 4,90,000 divided by value, total value is 0.2969. I think it is making one. Let's check it out. It should make, yes, it is. We have got the weightage of each individual bond we are holding in our portfolio. Now calculate individual duration, individual modified duration. So what you have to do is duration and convexity. Duration or convexity. Multiply duration. Let's say the duration is, the first bond is having a duration of 5, 6, 7 and 4. What you have to do, and convexity is 18, 19, 15 and 20. So portfolio duration is equals to 0.06 multiplied by 5 plus 0.6119 multiplied by 6 plus 0.0312 multiplied by 7 plus 0.2969 multiplied by 4 will give you your bond portfolio duration. Let's calculate what is the value. 0.06 into 5, 0.6119 multiplied by 6. I am taking the random numbers. Of course, you need to calculate duration and convexity of each bond using the various formula what we have already done. 0.0312 multiplied by 7, and then we will in last we will discuss the limitation, and that will create the way for next topic, that is duration based on curve. This is yield based duration, then we will go for curve based duration.
and then 0.2969 multiplied by 4. So total is equals to 5.3774. This is your total duration of overall portfolio. And in the same fashion, you can calculate portfolio convexity. Portfolio convexity is equals to 0.06 into 18, 0.6119 into 19, and 0.0312 into 15, and the last one 0.2969 multiplied by 20. So this will give us the overall portfolio's convexity, and then we will use this portfolio duration and convexity if there is a change in market interest rate. So with this calculation, we now know what are the limitations also. What are the limitations we got from this calculation? Two limitations we have got. The first limitation is we have assumed that yield used for pricing this ABCD bond is same. May not be the same actually, because of coupon rate, because of various reasons, time to maturity. So what we have used that irrespective of the type of bond ABCD, their tenure, their coupon rate, the yield curve is flat. Existing yield curve is flat. It is being valued at the same yield. And number two, if there is a change in yield, 1% yield change, that will apply on all the bonds A, B, C and D equally. If bond A is having a duration of 5 year, bond B it is having a duration of 5 year, 6 year, 7 year and 4 year, how come same impact on yield will be there in the market? Because changes in the market interest rate are depending on the demand and supply forces of money, and demand and supply forces will impact equally over the all tenure may not be true. So two limitation we have got, that this is suitable only where YTM of all bonds in the holding, all bonds are almost same, that is yield curve is flat. First of all, ye wahi pe possible hai. Second, this because you have used this modified duration, you have calculated using a yield, and if yield is different at all the durations point of time, then this weighted average is an illogical number. This approach assumes that yield of all maturities changes by same amount. So if it is a flat curve, so and any increase in 1%, this is your time and this is your yield. So if there is a 1% increase in the yield, so it is increasing for all the tenure equally, which may not be true. The curve may be left to right, upward sloping, downward sloping, inverted, or it may be curved. So two limitations. That is why we are now going to move to next topic, that is curve-based duration. These are yield-based duration and convexity. Now, next topic we will go for curve-based duration. So with this particular these three topics we are done with. Please do practice from StudyMat, and next topic we will go for curve-based duration. Thank you so much. Thank you everyone.